Who do you say I am? This is a question that is asked by Jesus to his own disciples after he has lived with them for a long time. My dear friends, once again welcome to Sursangam Reflections from Jaipur. Today, I would like to discuss a little about the feast that we are celebrating, namely the Transfiguration of Jesus. It falls on the 6th of August every year. It happens to be a Sunday this year. The disciples had known Jesus in different ways. They had seen him as a great preacher, and because of his preaching, there were thousands of people who were following him. He was no doubt a miracle worker, someone who could do certain extraordinary things. He was a healer. People came to him, flocked to him, for because of him, he touched them and he healed them. He was someone who prayed with them. He taught them how to pray. Lord, teach us to pray. But did they know him? This was the question that Jesus was asking them. Who do you say I am? मैं कौन हूं? मेरे बारे में आप क्या जानते हैं? And they give different reply as to what the people are saying. Some are saying you are like John the Baptist, some are saying you are like Elijah and one of the prophets. And Jesus says, say, what do you say I am? And Peter says, you are Christ, the Son of God. But really, did they understand Jesus? This is the question. So today, there is a scene which is extraordinary. It is a mystical experience of Jesus which is before them. Perhaps he had many more mystical experiences, but it's not well described in the Gospels. But today, this transfiguration that takes place on Mount Tabor is very graphically explained through various symbols. Symbols taken from the Old Testament, basically the symbol of Moses, who leads his people from slavery to liberation. And he is on Mount Sinai. It is there he receives the 10 commandments. He meets God, and there is a certain reflection of God on his face. And that can be seen when he comes down. People recognize him as a different person. A similar thing happens to Jesus Christ today. He takes these 3 apostles of his, James, John, and Peter, and he goes on Mount Tabor. And as Saint Luke tells us, during his prayer life, suddenly there is a change. Not only his inward change, but that inward change changes into an outward change. And the gospel tries to explain to us, he begins to shine like the sun. All his clothes and his face, everything begins to shine. And then they tell us the whole story where Peter and the other 2 disciples, they are wonderstruck. They want to stay there forever. And then they see Moses there once again and Elijah. But like a flash, that whole scene changes and then they come down from the mountain. प्यारे भाई और बहनों, आज इस घटना के बारे में जब हम सोचते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफिगरेशन, तो हमें भी प्रभु बुलावा देता है कि उनके समान हमारे जीवन में भी एक तेजस्वी आना चाहिए. हम निरे मनुष्य नहीं हैं, यानी हमारे मनुष्यता के बीच में एक ईश्वरता छिपी हुई है. उसको उजागर करना जरूरी है. इसके लिए हमारे अंदरूनी जीवन को बदलना जरूरी है. प्यारे भाई और बहनों, हम अक्सर दूसरे लोगों के सामने आकर्षक बनना चाहते हैं और अक्सर हम कॉस्मेटिक चेंज जो कहते हैं कर देते हैं ताकि दूसरे लोग हमें देखें और उन्हें अच्छे लगे. हमारा ड्रेस हो या हमारा मुखमंडल हो,
या जो भी मेकअप हम करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या जैसे हम बाहरी रूप हम दिखाना चाहते हैं, क्या अंदरूनी रूप वैसे ही है? कभी कभी नहीं है, हम उसको छिपा रखते हैं। प्रभु ने कभी भी अपने आप को नहीं छिपाया, और वे जो भी अंदर थे वो बाहर दिखाई दे रहा था। सच्चाई का जीवन जीना, मिलनसार होना, अपने जो एनिमी है उनको भी क्षमा देना, ये सब बार बार हम देखते हैं। और यही बात के लिए आज हमें प्रभु बुलावा देता है। वो चाहता है कि हमारा अंदरूनी जीवन में भी ट्रांसफिगरेशन हो, यानी जैसे ही हम स्पिरिट फिल्ड हो जाते हैं और आत्मा हमारे ऊपर उतर जाता है और हम में एक बदलाव आ जाता है, तो हम सच्चे धार्मिक बन जाते हैं। हम देखते हैं आजकल जो धर्म के नाम पर कत्ल हो रहा है, हिंसा हो रही है, और जो भी मणिपुर में हम देखते हैं और बहुत अलग जगह पर देखते हैं, इसका मतलब क्या है? हमें एक परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम जो मनुष्य है, मानव जो है, दानव बनता जा रहा है। और यह संभव है। हम नीचे भी जा सकते हैं तो ऊपर भी जा सकते हैं, हमारे ऊपर निर्भर है। हम राक्षस बन सकते हैं या हम एक फरिश्ता बन सकते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर है। और इसीलिए हमें धीरे धीरे जब परिवर्तन आ जाता है तो हमारा जीवन उजाला हो जाता है, और जो लोग हमारे साथ रहते हैं वो महसूस करते हैं इस व्यक्ति में कुछ अलग है। चाहे वो व्यक्ति कहीं पर भी हो, एक घर पर एक बहू आ जाती है और वो अच्छी है तो वो घर बदल जाता है। एक स्कूल में एक अच्छी टीचर आ जाती है, अच्छा वो पढ़ाई कराती है और हर प्रकार से वह मदद करती है, तो वह स्कूल बदल जाता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर हो या और कोई हो, वे लोग वहां पर आते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि वे ना केवल लॉ और ऑर्डर देखते हैं बल्कि उनका अंदरूनी जीवन भी बदला हुआ रहता है। ये लोग कभी गलत नहीं कर सकते। और इसीलिए महात्मा गांधी को कपड़ों की जरूरत नहीं थी, उनकी अच्छाई इतनी थी, वे एक महान आत्मा थे जिसके वजह से ही वे सबको सुंदर लगने लगे। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, मदर तेरेसा हो, या असंख्य दूसरे लोग जो इस संसार में आज भी जी रहे हैं, उनकी अच्छाई से ही यह संसार अच्छा है। बुराई जरूर है लेकिन अच्छाई है, और उनमें एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे बदलती है, यानी एक प्रोसेस जो बदल सकता है। जैसे कोई भी कीमती वस्तु है, एक पत्थर है, उसको जैसे ही तराशते हैं उसमें उजाला हो जाता है, चमक आने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन को एक बदलने की जरूरत है, उजाला करने की जरूरत है। प्यारे भाई और बहनों, आज का यह दिन कितना सुखमय है। हम अगर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे जरूर हम बदल जाएंगे। हमें कटुता कभी नहीं होगी और हमें प्यार झलक उठेगा, और यही हमारे संपूर्ण जीवन का सुंदरता है। आइए इसके लिए हम प्रार्थना करें, इसके लिए हम खोज करें और इसके लिए हम प्रयत्न करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Then Jesus took John and James and Peter with him and went up a hill to pray. And while he was praying, the aspect of his face changed its appearance, and his clothes became dazzling white. Suddenly 2 men were talking with him. They were Moses and Elijah, who appeared in heavenly glory. You will fulfill God's purpose. You will die in Jerusalem. James, John.
As they were leaving, Peter said to Jesus, Master, how good it is that we are here. We will make 3 tents. One for you, As Peter spoke, One a for cloud Moses. came and overshadowed them. and one for Elijah. And the disciples were afraid. And a voice came from the cloud saying, "This is my son, the chosen one. Listen to him."